only seven participants so far. Today would be the project actually. We have कौन कौन है हमारे पास? विश्वजीत, जितेंद्र, शाहिद, सृष्टि, सुमन एंड सुनील कुमार। गुड। हाँ ठीक है। कैसे हो आप लोग? सब ठीक है? हाँ हाँ। यस यस, ग्रेट। आज का सेशन होगा कंप्लीटली कोडिंग पार्ट है। मैं सोच रहा हूँ कि हम लाइव कोडिंग करते हैं। ठीक है, हमारे पास 2 घंटा है। सो स्टेप बाय स्टेप हम कोडिंग करते हैं, कैसे टैकल करते हैं एक डेटा सेट को। सो इट विल बी फन एक्चुअली। फाइन फाइन, गुड। ओके, वी हैव ओनली 9 participants so far। ठीक है, नो वरीज। हाँ, वी लेट्स वेट फॉर 2 to 3 minutes एंड उसके बाद हम चालू करते हैं। इन द मीन टाइम, डू यू वांट टू टॉक अबाउट समथिंग? कुछ भी हम नॉर्मल बातचीत कर सकते हैं 2-3 मिनट के लिए। उसके बाद वी विल जंप इनटू द कोडिंग पार्ट। I don't know why people don't continue these type of free excellent classes. I mean, it's not about the people, वो भी एक चीज है, but a timing थोड़ा off timing है। 6 बजे is people free नहीं होता है 6 बजे तक, क्योंकि lot of working people will get free after 6। so थोड़ा मुश्किल है उन लोगों को लिए। हाँ सर, कैन आई मेंशन दिस प्रोजेक्ट इन रेज्यूमे? हाँ, अभी हम अगले 2 सेशन पे करने वाले हैं उस प्रोजेक्ट को। आप यू कैन ऐड दिस इन रेज्यूमे बिकॉज वी आर गोइंग टू टैकल इट फ्रॉम स्क्रैच। Although we don't do much EDA because it is an object detection task, but you can definitely add this into your resume once we do the deployment as well. Deployment भी important चीज है। अगर deployment नहीं है तो no one even looking at projects these days deployment नहीं किया तो। So this session we will take care of all the coding stuff, and the next session we will do the deployment stuff। ठीक है? एंड यू विल सी हाउ फास्ट योलो इज। वो बहुत ही अच्छा मॉडल है एक्चुअली। हम्म। ठीक है। थोड़ा पेन हो रहा है, ठीक है, चलेगा। सो लेट्स वेट फॉर अ मिनट और मोर एंड देन वी कैन स्टार्ट। what platform we are going to use for deployment? See, अगर if you want to do a full fledged deployment, फ्रंट एंड के लिए फ्लास्क एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं। एंड देन उस एप्लीकेशन को यू कैन रन इट ऑन एनी क्लाउड एनवायरनमेंट यूजिंग AWS और एनी क्लाउड सर्विस GCP। बट उसके लिए आप कोबरनेटिस यूज करके एक डॉकर कंटेनर क्रिएट करके उस पर सारे डाल के वो डॉकर को डिप्लॉय करना है। ये दिस इज हाउ ए स्टैंडर्ड डिप्लॉयमेंट गोस ऑन। बट हमारे इसके लिए वी विल डू यूजिंग स्ट्रीमलीट और हगिंग फेस स्पेसेस, बहुत सारे चीज है। वी कैन यूज दैट, बट अगर फुल फ्लेज चाहिए तो यू नीड टू लर्न अबाउट kubernetes एंड dockers, and then you need to learn about flask, and then you need to have a bit of idea on GCP or AWS or any cloud service। वहां पे स्टोरेज लेके उस पे डाल के वहां पे इंस्टेंस क्रिएट करके उस इंस्टेंस पे ये सारे एक डॉकर इमेज रन करना पड़ेगा एंड उसको आपने डिप्लॉय करना पड़ेगा। थोड़ा कॉम्प्लेक्स टास्क है, बट हम नहीं कर पाएंगे इस सेशंस पे। अगर बाद में इफ यू आर कंटिन्यूइंग विद द लाइव क्लासेस देन वहां पे कर सकते हैं हम। Thank you, sir. Seriously, why people don't attend this kind of master place? I mean, it depends, यार. Not everyone is willing to upskill like you guys. आप लोग इतना effort मार रहे हैं, that means it shows that you guys want to upskill a lot. That's what matters. Even for me as well, to prepare these sessions, I need to prepare a lot actually, क्योंकि
मुझे भी सब कुछ पता नहीं होता है ना, सी इवन आई एम नॉट एक्सपर्ट इन ऑल द स्टफ। I do have my work. I am expert in some regions, but not in all regions. अगर मैं किसी को पढ़ाई करना चाहता हूँ, then I need to prepare myself to the extent that okay, ये सारे चीजें मुझे पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, उसके बाद आई कैन टीच समवन। सो उसके लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच एफर्ट्स यू आर विलिंग टू पुट इन योरसेल्फ टू अपस्किल योरसेल्फ। आई लाइक दिस थिंग्स, दैट्स व्हाई आई डू दिस थिंग्स। आई डोंट फील लाइक बर्डन। आई टेक माई टाइम, आई लर्न, आई प्रिपेयर कंटेंट, आई टीच। मुझे ये पसंद है। एंड इफ यू आर अर्निंग while I mean एक कहावत रहता है ना, if you are enjoying what you are doing while you are earning from that, that's the best one। so भी एक चीज है। चलो ठीक है। so अभी हम 12 लोग हैं। so let's start with the project introduction first। मैं अभी एक बार स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ एंड एक बार आप लोग कंफर्म कीजिए वेदर यू कैन सी माय स्क्रीन इन विच आई एम ऑन द केगल पेज। अगर आपको दिख रहा है तो देन वी कैन स्टार्ट, गो अहेड। यस, एंड स्क्रीन अच्छे से दिख रहा है ना? ठीक है। यस, ग्रेट श्रुति, सुनील, यस यस यस। सो हम क्या करते हैं अभी? पहले हम ये अंडरस्टैंडिंग करते हैं कि हमारे पास कुछ डेटा है ही नहीं। how you can create your own data? See, as a part of day to day life, my data science का काम पे है। I need to create data। डेटा मुझे कोई देता है नहीं। if you look at this Kaggle page here, you get the data। if you look at this, you have the annotations, you have the images। so किसी ने बना के दिया आपको इस डेटा। if you look at it, एक एक कार का एक इमेज है यहाँ पे, cars 1.png। ये annotations के cars 1.xml है, उस पे you have the bounding box information है। so don't worry, I will teach you how to do this। so पहले हमारा काम है कि एज ए डाटा साइंटिस्ट वर्किंग इन ए रियल टाइम एनवायरनमेंट, ये समझना चाहिए कि हाउ टू क्रिएट डेटा। हमारे पास डेटा नहीं है, हाउ कैन आई क्रिएट डेटा, हाउ कैन आई क्रिएट लेबल्स आउट ऑफ इट सच दैट आई कैन बिल्ड ए मॉडल आउट ऑफ इट। ठीक है। वो मेन चीज है। पहले हम क्या करते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड हमारा टास्क क्या है एंड हाउ वी कैन क्रिएट द डेटा। मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ बस। लेट मी टर्न ऑफ दिस एक्शंस, गिव मी अ मिनट। थोड़ा डिस्टर्ब कर रहे हैं। वेयर इज दिस? कहाँ गया यार? चलो ठीक है। सो एंड देन we will learn about how to create data, but we will use this data to do our project। ठीक है। उसके लिए अभी हमारा टास्क क्या है? लाइसेंस प्लेट डिटेक्शन है। हमें ये डिटेक्ट करना है। समझो यहाँ पे जो इमेज दिख रहा है आपको, दिस आर नॉट द लाइसेंस प्लेट्स फ्रॉम इंडिया। ये कुछ अलग कंट्री का है। हर एक कंट्री को अलग अलग मॉडल बनाना है यूजुअली। वी डू हैव सम इमेजेस फॉर इंडिया एज वेल, वो अलग चीज है। बट पहले हम क्या करना है कि वी नीड टू कलेक्ट ऑल द कार्स इंफॉर्मेशन। फोटोज खींचना पड़ेगा पहले। लेट मी गो थ्रू माई नोटबुक हियर। हमारा टास्क क्या है? लाइसेंस प्लेट डिटेक्शन। लाइसेंस प्लेट डिटेक्शन। इसके लिए मुझे क्या चाहिए? पहले मेरा इनपुट क्या है? इनपुट इज इमेज एंड बाउंडिंग बॉक्स ग्राउंड ट्रूथ, है ना? बाउंडिंग बॉक्स ग्राउंड ट्रूथ। image I can collect, so I can assign some people and ask them to click the pictures of the number board। हम ये कर सकते हैं। और एल्स हम क्या कर सकते हैं कि इफ यू हैव ए वीडियो फीड, अगर समझो आपके पास हाईवे का एक हाईवे पे कुछ कैमरा लगाया आपने, एंड यू आर रिकॉर्डिंग एवरीथिंग। इस वीडियो से यू एक्सट्रैक्ट फ्रेम्स। इस फ्रेम्स पे यू ट्राई टू कैप्चर क्या? नंबर नंबर प्लेट। ऐसे हम इमेज को कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। इट कुड बी एनी सिनेरियो, यू कैन मैन्युअली डू इट और यू कैन क्रिएट वीडियोस। वीडियो से फ्रेम्स उठा सकते हैं।
बट समझो आपने कलेक्ट किया 10,000 इमेजेस, इस पे जस्ट इमेजेस से यू डोंट हैव द बाउंडिंग बॉक्स इंफॉर्मेशन, बीबी इंफॉर्मेशन मिसिंग है। सो इसको क्या करना है आप लोग, मैन्युअली एक इमेज उठाओ एंड देन यू ट्राई टू क्रिएट बाउंडिंग बॉक्स मैन्युअली, एंड इसको कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करो। सो लेट्स से इसका कोऑर्डिनेट्स एक्स आई वाई आई डब्ल्यू आई एच आई आपको आ गया। सो आपने क्या करना है, हर एक इमेज के लिए आप मैन्युअली लेबल करना है एंड इसको कोऑर्डिनेट्स पे आप सेव करना है। एंड ऐसे आप 10,000 इमेजेस को 10,000 टाइम्स यू कैन डू अ लेबलिंग। ये बड़ा मैनुअल टास्क है, बहुत मुश्किल टास्क है, एंड यू हैव डेटा सेट such that you have images plus labels. This will be my input data to my model. ठीक है, ये एक तरीका है। और एक तरीका है कि अगर समझो योलो इज a good algorithm for predicting the bounding boxes, right? So हम क्या करते हैं, you can input हर एक image and you pass it to YOLO and ask it to predict the bounding box. आपने फाइन ट्यून नहीं किया, जो अवेलेबल मॉडल है उसके साथ काम कर रहे हैं। सो समटाइम्स क्या होता है, इट विल ट्राई, इट विल फेल टू प्रिडिक्ट अच्छे से। सो इसके लिए इसको बोलते हैं ऑटोमेटेड वे। ऑटोमेटेड वे पे क्या होता है, यू यू विल रिलाई ऑन सम प्री ट्रेन्ड मॉडल। ये प्री ट्रेन्ड मॉडल पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं एंड यू आस्क दिस प्री ट्रेन्ड मॉडल टू आउटपुट द बाउंडिंग बॉक्स इंफॉर्मेशन, एंड यू कैन मैन्युअली क्रॉस चेक अगर सही पे हर इमेज के लिए अच्छा पे आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर सही पे नहीं दे रहा है तो देन यू नीड टू मॉडिफाई इट टू द मैनुअल स्टफ। ये दो तरीका है। एक चीज है कि यू कैन ट्राई मैन्युअली एंड दिस इज द बेस्ट वे, बट इट इज अ टाइम टेकिंग वे। और एल्स you can try to rely on some pre-trained models and this will give you the bounding boxes। ठीक है, एनी क्वेरी सो फार? अभी हम देखते हैं मैन्युअली कैसे करना है। चलेगा। सो इफ यू गो टू ए वेबसाइट कॉल्ड रोबोफ्लो, सो रोबोफ्लो एनोटेट इज अ टूल है, ठीक है। रोबोफ्लो एनोटेट क्या हो गया, रोबोफ्लो एनोट रोबोफ्लो एनोटेशन, हाँ रोबोफ्लो एनोटेट लोड इमेजेस फास्टर देन एवर। सो साइन इन करते हैं इसको। So there are multiple tools, free tools, paid tools. You can use these tools actually to do the here. So हमारे पास एक मैंने एक वर्क स्पेस क्रिएट किया विच इज कॉल्ड लाइसेंस प्लेट डिटेक्शन। यहाँ पे डेटा सेट पे एक इमेज को अपलोड किया मैंने एक्चुअली। सो लेट्स ट्राई टू अपलोड वन मोर इमेज। सो हम क्या करते हैं, कार लाइसेंस प्लेट गूगल करते हैं, गूगल से इमेज डाउनलोड कर सकते हैं आप चाहे तो। समझो इसको मैं लाइक करना है, सो सेव इमेज एज, मैं इसको डाउनलोड करता हूँ पहले, डाउनलोड्स पे है, एंड देन आई विल अपलोड द इमेज हियर। कहाँ अपलोड करना है, डेटा से अपलोड डेटा, एंड यू कैन क्लिक ऑन अपलोड एंड इसको अपलोड कर लेते हैं। देखो इसको अपलोड कर रहा हूँ मैं अभी, सेव एंड कंटिन्यू। ठीक है, ये इमेज अभी अपलोड हो गया। इफ यू लुक एट इट हियर, यू हैव थ्री ऑप्शंस। स्टार्ट ऑटो लेबल। सो ऑटो लेबल मतलब क्या होता है, दे विल रिलाई ऑन प्री ट्रेन्ड मॉडल्स। स्टार्ट रोबोफ्लो लेबलिंग, वहां पे रोबोफ्लो विल गिव यू सम टीम, वो लेबलिंग करने के लिए यू हैव टू पे दम। अगर यू डोंट हैव द वर्क स्पेस, यू हैव समथिंग ऑन द चार्ट, लेबल इमेज एग्जीक्यूटेबल। लेबल इमेज एग्जीक्यूटेबल मतलब क्या, समझ में नहीं आया मुझे। सो हियर मैं क्या करता हूँ, विल डू स्टार्ट मैन्युअल लेबलिंग।
So assign images, total image to attain, search for teammates and assign images. अभी क्या करोगा, मैं इसको लेबल करता हूँ, ठीक है, डबल क्लिक ऑन इट, एंड इफ यू लुक एट इट, मैं यहाँ पे आई कैन डू ए बाउंडिंग बॉक्स, ठीक है, आई थिंक दिस इज द परफेक्ट वन। इसको एंड मैंने ऑलरेडी लेबल क्रिएट किया लाइसेंस प्लेट, इसको सेव कर देता हूँ मैं, एंड इफ यू लुक एट इट द रॉ डेटा लेबल्स, एंड हमें हम लेबलिंग कर दिया, नो एनोटेशंस क्यों, batches, camera extensions, jpg, height, metadata, split, updated, uploaded, labels, license plate, एक किया ना हमने लेबल, एक मिनट, ये लेबल एक्चुअली, लाइसेंस प्लेट टू लेयर्स, एक एक को डिलीट कर देते हैं, ठीक है, and this is the one attributes, so this is regarding the information, comments नहीं है, history, you uploaded raw data, why is it saying no annotations, it should give you the box information actually, seconds, milliseconds, समझ में नहीं आ रहा क्यों नहीं दिया, but if you look at the original date image, मैंने इस पे किया एक्चुअली, इफ यू लुक एट इट, आई लेबल्ड दिस माई सेल्फ, एंड यहाँ पे आपको मिल जाएगा लेबल क्या है, एक्स क्या है, वाई क्या है, विड्थ क्या है एंड हाइट क्या है, so you get this box information under boxes, so and you can download this, you can download for every image, so you have हर image के लिए you have multiple labels, अगर मुझे यहाँ पे भी एक label create करना है, then I can create one more label as well, and I can click on this and I can click on this and I will say car logo, car logo and add it, so और एक label create किया मैंने, and it should reflect here, क्यों नहीं हो रहा है, समथिंग इज मेसिंग अप, कार लोगो देखो, लेयर्स वी हैव दिस थिंग्स, ठीक है, यहाँ पे फॉर सम रीजन इट इज नॉट अपडेटिंग, बट मैंने आप पहले किया एक्चुअली, इफ यू लुक एट इट लाइसेंस प्लेट्स, सो जैसे आपने, देयर इज एग्जीक्यूटेबल नेम लेबल इमेज टू एनोटेट, अच्छा लेबल इमेज एग्जीक्यूटेबल, हाँ वो भी कर सकते हैं एक्चुअली, लेबल इमेज एग्जीक्यूटेबल, लेबल इमेज, बहुत सारे वी हैव द पैकेज एज वेल, एंड लेबल इमेज सॉफ्टवेयर्स भी है, यू कैन यूज एनी ऑफ द सॉफ्टवेयर्स टू लेबल द इमेजेस एंड यू गेट अ जेसन एक्सएमएल फॉर्मेट, ठीक है, आई जस्ट वांट टू टॉक यू अबाउट दैट, सो यहाँ पे हमारे पास डेटा सेट है, इफ यू लुक एट इट वी हैव ओनली 433 इमेज है, ठीक है, एंड देन वी हैव एनोटेशंस, एंड देन वी हैव द इमेजेस, हमारे पास इमेजेस भी है, हर एक इमेज के लिए वी हैव द एनोटेशंस, एंड इफ यू लुक एट वन ऑफ द एनोटेशंस फाइल, इट लुक्स समथिंग लाइक दिस, यहाँ पे हमारा फोल्डर क्या है, फाइल नेम क्या है, उस फोटो का विड्थ और हाइट क्या है, डेप्थ क्या है, विच इज आरजीबी चैनल्स, एंड देन ऑब्जेक्ट क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है लाइसेंस प्लेट है, ठीक है, एंड देन वी हैव ऑब्जेक्ट के अंदर बाउंडिंग बॉक्स है, वी हैव एक्स मिन वाई मिन एक्स मैक्स वाई मैक्स, ठीक है, व्हाट इज दिस एक्स मिन वाई मिन एक्स मैक्स वाई मैक्स, सो समझो मेरे पास एक इमेज है, ठीक है, एंड दिस इज माई बाउंडिंग बॉक्स है, so this coordinate will be x minimum coordinate, and this coordinate will be x max, and this coordinate will be y minimum, and this coordinate will be y max है, so हमारे पास a वाला a वाला a वाला a वाला है, x min, y min, x max and y max, and a format है pascal vosif dataset format है, but we want to convert this into YOLO format. YOLO will expect x center, y center, width and height. हमें ये चाहिए, सेंटर डिटेल्स चाहिए, ठीक है, सो हमें सेंटर डिटेल्स कैसे आते हैं, सो लेट्स टेक दिस, ये इमेज है, एंड लेट्स अज्यूम दिस इज जीरो कास्ट जीरो,
एंड हमारा बाउंडिंग बॉक्स यहाँ पे है, एंड वी नो एक्स मिन है एंड एक्स मैक्स है, वाई मिन है एंड वाई मैक्स। अगर मुझे सेंटर चाहिए, सेंटर कैसे होता है, अगर लेट्स अज्यूम दिस इज अ वैल्यू ऑफ 2, दिस इज अ वैल्यू ऑफ 6, इस सेंटर क्या होता है, सेंटर विल बी द 4, राइट? हाउ डिड वी गेट 4? 2 + 6/2, राइट? सो एक्स सेंटर क्या होता है, एक्स मिन प्लस एक्स मैक्स बाई 2। वाई सेंटर क्या होता है, वाई मिन प्लस वाई मैक्स बाई 2। ठीक है, मुझे ये विड्थ चाहिए, ये हाइट चाहिए। सो विड्थ क्या होता है, विड्थ इक्वल टू एक्स मैक्स माइनस एक्स मिन है ना, एक्स मैक्स माइनस एक्स मिन। सो दिस विल गिव यू द विड्थ, एंड हाइट इक्वल टू वाई मैक्स माइनस वाई मिन। सो मुझे उस XML फाइल से ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन करना है, सच दैट आई विल कन्वर्ट दिस इनटू योलो फॉर्मेट। ये हम खुद करना पड़ेगा, ठीक है? Any queries so far regarding these calculations? Annotation format is different for different tasks. Suppose I have annotated the data and get it in the form of XML. How can I get it in the form of text? हाँ, हम करते हैं ना, अनुष्का श्रीवास्तव, we will do that in the coding part itself. हमारे पास Excel data, XML file data आया, and we will convert that into text. So don't worry, we will do the live coding in this session. We will do everything from scratch. हर एक चीज हम एक्सप्लेन करते हैं, आई मीन वी विल डू द ट्रेनिंग एज वेल, सो डोंट वरी अबाउट दैट। सो हम योलो फॉर्मेट को चेंज करना है तो देन आई हैव टू डू दिस ट्रांसफॉर्मेशंस, एंड दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज ओनली फ्रॉम दिस XML format to the YOLO format, but YOLO expects the data to be normalized. अगर नॉर्मलाइज्ड करना है तो देन आई हैव टू डिवाइड दीज थिंग्स विद द नंबर ऑफ पिक्सल्स, है ना, वो भी करते हैं हम, सो डोंट वरी। सो लेट्स स्टॉप शेयरिंग हियर राइट नाउ। एनी क्वेरीज सो फार रिगार्डिंग द कैलकुलेशंस? अगर सब सही है तो देन वी कैन स्टार्ट विद द कोडिंग पार्ट एक्चुअली। No queries, good. Because this calculation is needed, because whenever you want to do this kind of object detection task, you have to look at the format of the data. जो कुछ भी फॉर्मेट, उस फॉर्मेट को चेंज करना पड़ेगा कैलकुलेशन यूज करके। ठीक है, अभी आई विल शेयर द स्क्रीन अगेन एंड वी विल डू द लाइव कोडिंग पार्ट, ठीक है? चलेगा। नाउ लेट मी, वेयर इज दिस? Give me a minute. Let me get all of these. I will just get. चलेगा। Now let me share the screen again and let me know once it is visible. ठीक है? मेरा स्क्रीन दिख रहा है अभी? आई एम स्टिल ऑन द केगल पेज। यस, ग्रेट। सो हमें क्या करते हैं अभी, यहाँ पे 433 images है। You can click on new notebook here and it will create the notebook for you, ठीक है? एंड यहाँ पे डेटा आ जाता है यहाँ पे बाय डिफॉल्ट, यू डोंट नीड टू कॉपी अबाउट द डेटा एंड ऑल दैट स्टफ। एंड देन हमें यहाँ पे क्या करना है कि एक्सेलरेटर पे GPU 4x2 कर लो, and it will say turning on will reduce the CPUs available only speed of the main. Okay, we need GPU because we are training a neural network, so turn on GPU 4x T2, ठीक है? And then you can start the session actually. So session start करने के लिए, so let's import a couple of stuff. So let me remove all of these things, ठीक है? And let's click on execute one of the cell। चलेगा, सेशन स्टार्ट हो रहा है, एंड वन सेशन स्टार्टेड यू विल सी ग्रीन कलर हियर। स्क्रीन एवरीथिंग क्लियर एंड विजिबल, राइट?
because we are doing a live coding for the first time. I don't want anything to mess up actually. Yes, cool. हाँ, ठीक है. सो यहाँ पे हमने क्या किया, पहले we imported a couple of modules. We will talk about those while we are doing the coding part. ठीक है. एंड हमें कर रहा है कि अगर कूड़ा अवेलेबल है, कूड़ा इज जीपीयू एक्चुअली, अवेलेबल है तो बताओ. अवेलेबल है क्योंकि वी एनेबल्ड दिस जीपीयू, इसलिए अवेलेबल है. सो हम क्या करना है पहले, योलो इज एन आर्किटेक्चर डेवलप्ड बाय अल्ट्रालिटिक्स. ठीक है. सो योलो V8 Ultralytics, something like that. So if you look at it, Ultralytics is a website where you can get the YOLO actually. So उस अगर हम वो use करना है, then we have to install Ultralytics. So let me zoom in a little bit. ठीक है. Now let me do this. So this is much better, right? Coding के लिए. Let me open the chat. इतना तो यस, कूल. सो हम क्या करते हैं अभी, पिप इंस्टॉल अल्ट्रालिटिक्स. ठीक है, एग्जीक्यूट करते हैं हम. सो डाउनलोड कर रहे हैं एंड हो गया. व्हाई आर वी डूइंग दिस, बिकॉज वी वांट टू सॉरी, वी वांट टू गेट द योलो आर्किटेक्चर ऑन टू दिस नोटबुक, इसलिए हमने इंस्टॉल कर रहे हैं. ठीक है. एंड थोड़ा टाइम लेते हैं. एंड देन वी विल ऑल्सो डू पिप इंस्टॉल, pip install -u ipy widgets. दिस इज टू गेट, ये एक पैकेज है विडजेट्स के लिए. क्या हो गया. अच्छा, ठीक है. So a package which will give you the widgets appearing on the kernel itself. This will be useful while you are doing the model training, visualize करने के लिए. अगर नहीं है तो ये भी इंस्टॉल कर लो. ठीक है. बाद में आई विल शेयर द नोटबुक एज वेल, सो डोंट वरी. हाँ, अभी हम देख के गए तो यहाँ पे हमारा डेटा सेट है. ठीक है. इट इज अंडर कार प्लेट डिटेक्शन. यहाँ पे क्लिक ऑन कॉपी फाइल पाथ. ठीक है. एंड देन हम क्या करते हैं, यहाँ पे डेटा सेट पाथ सेट करते हैं. डेटा सेट पाथ इक्वल टू दिस वन. सो हम ये बोल रहे हैं कि इस पाथ पे हमारा डेटा है. ठीक है. नाउ इफ यू लुक एट दिस इमेजेस, cars 1, cars 10, cars 100 जैसा है. एंड इफ यू लुक एट इट एनोटेशंस, वी हैव द नंबर्स एज वेल. हर एक इमेज के लिए नंबर है. अभी हम क्या करने वाले हैं, वी विल राइट ए फंक्शन टू एक्सट्रैक्ट द नंबर्स फ्रॉम ए गिवन स्ट्रिंग. वो क्यों है बाद में यू विल गेट टू नो. ठीक है. सो उसके लिए हम regex यूज करते हैं, import re. एंड देन हमें क्या करना है, मेरे पास समझो एक एग्जाम्पल है, टेक्स्ट फाइल है, फाइल 123.txt. सो व्हाट आई वांट टू डू इज, अगर मेरा इनपुट ए है तो आई वांट द आउटपुट टू बी 123. जहां पे नंबर से वो नंबर्स उठाना पड़ेगा मुझे. उसके लिए मैंने एक फंक्शन लिखता हूँ, फाइंड द नंबर इन द स्ट्रिंग. ठीक है. एंड इसको ये इनपुट लेते हैं फाइल नेम. एंड ये हम करते regex यूज करके. अगर मैच इक्वल टू, हम क्या करते हैं, re.search. सर्च क्या करता है, सर्च विल इज अ फंक्शन विच विल सर्च फॉर समथिंग दैट यू वांट टू डू. हमें सर्च करने सारे डिजिट्स. सो इसके लिए हम क्या करते हैं, आर एंड देन स्लैश, आई वांट टू फाइंड ऑल द डिजिट्स डी. ठीक है. एंड आई वांट टू वाई प्लस ईयर प्लस, क्योंकि आई वांट टू फाइंड द कंसिक्वेंट डिजिट. जितना डिजिट है उतना लेना पड़ेगा मुझे. एंड देन आई विल क्लोज दिस. एंड देन मैं क्या करता हूँ, फाइल नेम, इस फाइल नेम में सर्च करने को बोल रहा हूँ मैं. ठीक है. अगर इफ मैच, अगर मैच फाइंड किया, हम क्या रिटर्न करते हैं, रिटर्न, लेट मी पुट इन सम सेल कोड सेल्स हियर. हाँ, रिटर्न इंटीजर ऑफ दैट मैच. मैच डॉट
ग्रुप ऑफ जीरो, ऑफ वो नंबर भेजो अगर मैच फाइंड नहीं किया, एल्स आर ई रिटर्न जीरो। ठीक है, सो इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं पहले। सो लेट्स एग्जीक्यूट दिस। हम एक एग्जांपल के लिए हम ये ट्राई करते हैं। सो प्रिंट, वी विल पास समथिंग। यहाँ पे एक फाइल नेम पास करते हैं, विच इज फाइल 123.txt। ठीक है, एंड देन आई विल क्लोज दिस एंड आई एग्जीक्यूट दिस। सो देखो, आई एम गेटिंग, अगर मेरा इनपुट ये है, देन आई एम गेटिंग द आउटपुट एज 123। चलेगा? तो दिस इज द फंक्शनैलिटी ऑफ दिस फंक्शन। यहाँ पे वी आर नॉट फॉलोइंग एनी कोडिंग स्टैंडर्ड्स। अगर कोडिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करना है तो देन आई हैव टू डू द कमेंट्स एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। वो कमेंट वाला कोड आई विल डू इट लेटर, बट यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करते हम, इसलिए हम कोडिंग स्टैंडर्ड्स इतना ज्यादा फॉलो नहीं कर रहे। वी वांट टू अंडरस्टैंड द फंक्शनैलिटी, उसके बाद हम जो कुछ भी चाहिए कोडिंग स्टैंडर्ड फॉलो कर सकते हैं एक्चुअली। चलेगा? नाउ अभी हमारे पास क्या है, एक्सएमएल फाइल्स है। इस एक्सएमएल फाइल्स को हमें रीड करना पड़ेगा, मॉडिफिकेशंस करना पड़ेगा, एंड एज अनुष्का श्रीवास्तव mentioned we want to convert them into text format as well। so वो भी हमें करना पड़ेगा। ठीक है, so for that we will create a function। इनिशियली हम क्या करते हैं, we will do import सारा वो क्या करते हैं, let's create a dictionary, labels dict, एंड इस पे हम डिक्शनरी ऑफ, डिक्ट ऑफ, हमें क्या क्या सेव करना पड़ेगा, पहले सेव करना पड़ेगा इमेज पाथ। आई वांट टू सेव इमेज पाथ एंड आई विल कीप इट इनसाइड अ लिस्ट, कॉमा xmin। xmin क्या है, एंड देन xmax, you will understand this, ymin, and then ymax, ymax, एंड देन इमेज को विड्थ क्या है, हाइट क्या है, इमेज विड्थ एंड देन इमेज हाइट। ठीक है, चलेगा, ये सारे हम सेव करते हैं। ठीक है, दिस डिक्शनरी पे, सो लेट्स एग्जीक्यूट दिस। अभी इफ आई क्लिक ऑन दिस लेबल्स डिक्शनरी, अभी कुछ भी नहीं रहता है, सारे एम्प्टी है फॉर नाउ। सो हम क्या करना है, वी नीड टू रीड ऑल ऑफ दिस एनोटेशंस, एनोटेशंस के अंदर है। सो आई वांट टू रीड दिस फाइल्स, एक्सएमएल फाइल्स को रीड करना है मैं मुझे। XML files equal to, we will use something called as glob, which is from a package, import OS and import from glob, import glob। ठीक है, and we will do glob, and you will understand what this glob is giving। Let's wait for a minute। and हम क्या कर रहे हैं, we want to read all of the data sets। सो हमारे पास ऑलरेडी ये पाथ सेव किया, कहाँ सेव किया, डेटा सेट पाथ के अंदर, डेटा सेट, एंड देन आई वांट टू रीड इनसाइड दैट एनोटेशंस को, एनोटेशंस, एंड एनोटेशंस के अंदर बहुत सारे फाइल्स है, आई वांट टू रीड ऑल ऑफ दोस फाइल्स। सो यहाँ पे हमें क्या करना है, स्टार डॉट एक्सएमएल। सो व्हाट दिस स्टार implies is I want to read all the files which are having the extension as XML। ठीक है, एंड आई विल डू दिस। चलेगा, एंड आई विल print this XML files, and if you look at it, I get all the file names path actually, that is why we are using glob। ठीक है, and then हमने क्या करना है, we need to go through each and every file in this one, and यहाँ पे cars 0 1 2 3 sorted way पे है ना, यहाँ पे shuffled हो गया। I want to read everything in a sorted way, इसलिए हम क्या करते हैं, for file name in XML files in sorted XML files, sorted यूज कर रहा हूं मैं। एंड यहाँ पे सॉर्टेड का की कौन सा बेसिस पे सॉर्ट करना है हमें, वी नीड टू सॉर्ट बेस्ड अपॉन द नंबर, राइट,
car 0, car 1, car 2। अगर हमें फाइल नेम से नंबर उठाना है, उसलिए हमने एक फंक्शन लिखा, द नंबर इन द स्ट्रिंग। सो अगर ये स्ट्रिंग पास किया पहले वाला, एंड देन इट विल, अगर पहले वाला ये जाता है, इट विल चेक फॉर दिस नंबर, यहाँ पे नंबर उठाते हैं, एंड इट विल सॉर्ट ऑल ऑफ दिस बेस्ड अपॉन दोज नंबर्स। ठीक है। एंड इफ आई प्रिंट फाइल नेम, इफ आई लुक प्रिंट फाइल नेम, एंड इफ आई क्लिक दिस, ये देखो 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे आ गया। सो एवरीथिंग इज इन सॉर्टेड वे। ठीक है। एंड वन कंफर्मेशन, कोडिंग का पेस अच्छा है ना, नॉट टू फास्ट नॉट टू स्लो, जस्ट वन कंफर्मेशन, everyone is able to follow the coding stuff as well, right? पेस ओके, गुड गुड गुड, यस। ठीक है। या जहाँ पे आपको कुछ डाउट्स वगैरह है, प्लीज पोस्ट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल टेक इट अप, डोंट वरी। ठीक है। सो अभी हम क्या करना है, we will use something called as XML tree. So we have one package called import XML dot etree dot elementary। ठीक है। एस, इसको हम XCT के नाम पे, import pandas नाम पे, पीडी जैसे हम इसको import करते हैं। ठीक है। दिस विल बी यूजफुल when we want to do the XML operations, XML फाइल ऑपरेशंस। हम क्या करने वाला है, इसको info इक्वल टू, हम XCT इसको कॉपी करते हैं एंड इसको पार्स करते हैं, एंड वी विल पास द फाइल नेम। सो लेट्स प्रिंट इन्फो एंड लेट्स डू ए ब्रेक हियर। ये एक XML ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है। हम जहाँ पे एक फाइल नेम है, वो फाइल नेम को इसका पास किया हम। ठीक है। एंड उसके बाद हम क्या करने, ये सारे ट्री स्ट्रक्चर जैसे है, रूट इक्वल टू इन्फो डॉट गेट रूट, ये सारे ट्री स्ट्रक्चर से एक्चुअली लेट्स डू अ प्रिंट ऑफ रूट एज वेल, सो दैट यू विल बी एबल टू सी व्हाट इज हैपनिंग। सो एनोटेशन आ गया, समझ में आया? सो वी रीड दिस फाइल, XML फाइल, यहाँ पे रूट क्या है, एनोटेशन है। सो वी फाउंड द रूट टू बी एनोटेशन हियर। ठीक है। सो जैसे वी कैन एक्सेस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द XML फाइल यूजिंग द रूट ऑफ दिस थिंग्स, चलेगा? सो दैट इज वाई वी नीड दिस XML पार्सर। एंड देन क्या करते हैं, सो लेट्स रिमूव द ब्रेक हियर। ब्रेक ब्रेक रखते हैं, सो दैट इट विल बी इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड क्या चल रहा है। नाउ वी नीड टू फाइंड, क्या क्या फाइंड करना है यहाँ पे, वी नीड टू फाइंड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का क्यों ऑब्जेक्ट फाइंड करना है, वहां पे वी हैव द इंफॉर्मेशन, एंड गिव मी मिनट, एंड देन वी नीड टू फाइंड द बाउंडिंग बॉक्स। ये दोनों फाइंड करना है हमें पहले। सो हम पहले क्या करना है, वी नीड टू फाइंड द ऑब्जेक्ट। member object equal to sorry, member object equal to, हम क्या करने वाले हैं, रूट डॉट फाइंड। हमें क्या फाइंड करना है, ऑब्जेक्ट को फाइंड करना है। ठीक है। एग्जीक्यूट हो गया। एंड उसके बाद वी ऑल्सो नीड टू फाइंड बाउंडिंग बॉक्स। इसके अंदर बाउंडिंग बॉक्स है, इफ यू लुक एट इट, ऑब्जेक्ट के अंदर बाउंडिंग बॉक्स है। सो हमें क्या करना है, मेंबर ऑब्जेक्ट के अंदर बाउंडिंग बॉक्स सर्च करना है। लेबल्स इन्फो इक्वल टू मेंबर ऑब्जेक्ट डॉट फाइंड। इस पे क्या फाइंड करना है हमें, बाउंडिंग बॉक्स, BND BOX, द सेम नेम वी हैव टू यूज करना है यहाँ पे भी। ठीक है। सो इफ आई क्लिक प्रिंट मेंबर ऑब्जेक्ट कामा labels info, I am just doing all of this so that you will be able to visualize क्या क्या चल रहा है। So हमारा बॉन्डिंग बॉक्स एलिमेंट आ गया एंड ऑब्जेक्ट का एलिमेंट आ गया। ठीक है। उसके बाद we want to extract all of those variables, xmin, ymin, xmax, ymax and ymax। so इसके लिए हम क्या करना है, xmin इक्वल टू इंटीजर ऑफ, वी आर कन्वर्टिंग इट टू इंटीजर। यहाँ पे लेबल्स इन्फो के अंदर रहता है, लेबल्स इन्फो डॉट फाइंड। हम क्या फाइंड करना है यहाँ पे, एक्समिन फाइंड करना है, एक्समिन सॉरी, एक्समिन को फाइंड करना है, डॉट टेक्स्ट।
सो जैसे हम लेट्स डू द प्रिंट ऑफ एक्स मिन. सो इफ आई डू इट, मेरा एक्स मिन आ गया 226. सो जैसे आई वांट टू डू इट फॉर एक्स मैक्स वाई मैक्स. सो एक्स मैक्स होगा ये. ठीक है, एक्स मैक्स एंड दिस वुड बी वाई मिन एंड दिस वुड बी वाई मैक्स. एंड यहाँ पे एक्स मैक्स होगा, मैक्स, एंड दिस वुड बी वाई मिन एंड दिस वुड बी वाई मैक्स. सारे चीजें आ गया. सो लेट्स डू अ प्रिंट ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स. एक्स मिन and then x max, y min and then y max. इफ यू लुक एट इट, मेरा सारे चीज आ गया. एक्स मिन आ गया, एक्स मैक्स आ गया, वाई मिन आ गया, वाई मैक्स आ गया. एंड इसको हमने वी विल क्रिएट इट इन डेटा फ्रेम के अंदर डाल देते हैं बाद में. ठीक है. सो अभी इमेज का नेम क्या है? इमेज नेम इक्वल टू रूट डॉट फाइंड. इमेज नेम फाइंड आउट करना है. रूट डॉट फाइंड. क्या फाइंड आउट करना है? फाइल नेम फाइंड आउट करना है. फाइल नेम डॉट टेक्स्ट चलेगा. एंड देन इमेज टेक्स्ट एंड देन इमेज पाथ. ये कहाँ है? इमेज पाथ इक्वल टू इमेज पाथ कहाँ है? वी हैव द इमेजेस इनसाइड दिस इमेज फोल्डर है ना. तो इसके लिए हम क्या करते हैं? वी विल यूज अ मॉड्यूल कॉल्ड os डॉट पाथ डॉट ज्वाइन. हम पहले डेटा सेट पाथ है, डेटा सेट पाथ कमा, इट इज अंडर इमेजेस डायरेक्टरी के अंदर है. सो आई विल क्रिएट इमेजेस डायरेक्टरी एंड देन इमेज नेम क्या है? यहाँ पे इमेज नेम आया. इमेज नेम आई विल डू इट हियर. ठीक है. सो आई विल डू प्रिंट इमेज नेम एंड इमेज पाथ एंड इमेज पाथ. एंड इफ यू लुक एट इट, मेरा कार्स जीरो पीएनजी है एंड इट इज इनसाइड दिस इमेज पाथ है. सो मेरे पास सारा इंफॉर्मेशन आ गया. हाँ, मेरा लेबल आ गया, बॉन्डिंग बॉक्सेस आ गया, एक पाथ आ गया, सब कुछ आ गया. अभी हमने दो चीज चाहिए विच इज विड्थ एंड हाइट. अगर विड्थ एंड हाइट करने के लिए मुझे CV2 चाहिए. आई वांट टू रीड द इमेज एंड देन सो इम्पोर्ट CV2. इम्पोर्ट CV2. ठीक है. एंड यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं? उस इमेज पाथ आया ना, उस इमेज पाथ को रीड करते हैं एंड इट विल गिव यू द हाइट एंड विड्थ. एक्चुअली हाइट एंड विड्थ इक्वल टू CV2 डॉट रीड. आई एम रीड. क्या रीड करना है? हमें इमेज रीड करना है. इमेज पाथ को रीड करना है. ठीक है. एंड आई वांट टू गेट द शेप ऑफ द इमेज पाथ रीड करने के बाद. सो आई विल गेट हाइट एंड विड्थ. सॉरी, यहाँ पे शेप कर लेते हैं. एंड देन आई विल प्रिंट हाइट एंड विड्थ. हाइट कामा विड्थ. क्या हो गया? टू मेनी वैल्यूज टू अनपैक. क्यों? CV2 डॉट आई एम रीड डॉट शेप. अच्छा, यहाँ पे क्या हो गया ना, शेप विल गिव यू RGB. तीन लेयर्स रहते हैं ना, एंड आई एम नॉट सेविंग वन मोर वैल्यू हियर. सो इसके लिए इट विल शो यू एन एरर. एंड इफ आई डू इट, मेरा इमेज विथ हाइट आ गया, विड्थ आ गया. चलेगा. अभी यह सारे इंफॉर्मेशन हमें हमारे पास आ गया. सो हम क्या करने वाला है? ये सारे इंफॉर्मेशन इस लेबल्स क्रिएट किया ना हमने यहाँ पे, इसके अंदर अपेंड कर लेते हैं. सो हम क्या करने वाले? अपेंड ऑल ऑफ दिस इंफॉर्मेशन लेबल्स डिक्ट. एंड इस पे इमेज पाथ का नाम पे एक है ना, इमेज पाथ डॉट अपेंड. इमेज पाथ के अंदर क्या है अपेंड करना है? इमेज पाथ को अपेंड करना है. ठीक है. एंड देन आई विल कॉपी दिस मल्टीपल टाइम्स. ठीक है. एंड उसके बाद हमें एक्स मिन को अपेंड करना है, एक्स मैक्स को अपेंड करना है, वाई मिन को अपेंड करना है, वाई मैक्स को अपेंड करना है. एनी. ठीक है. एंड देन वी ऑल्सो वांट टू अपेंड इमेज विड्थ को अपेंड करना है एंड इमेज हाइट को अपेंड करना है. ये सारा चीजें हमें वी वांट टू सेव इट. सो आई विल रिमूव दिस वन. सो यहाँ पे क्या आने वाला है? एक्स मिन, एक्स मैक्स, वाई मिन एंड देन वाई मैक्स. एंड यहाँ पे हमने जो अभी विड्थ और हाइट आ गया ना, विड्थ
एंड देन यहाँ पे हाइट. सो लेट्स डू ए प्रिंट ऑफ लेबल्स डिक्ट एज वेल. लेबल्स डिक्ट, ये देखो लेबल्स डिक्ट पे सारे इंफॉर्मेशन आ गया. सो इमेज पाथ क्या है, एक्स मिन क्या है, एक्स मैक्स क्या है, वाई मिन क्या है, वाई मैक्स क्या है, एंड इट इज फॉर ओनली वन लूप. सो हमने क्या करना है, वी वांट टू एग्जीक्यूट दिस फॉर all the labels. So let me comment out all the print statements here. I added this print statements because you will be understanding what is happening at every line. जो मैं जहाँ पे whenever I do the coding part, I do like this, and I will execute it for all the iterations here. And let's, so it is executing for all the images. And उसके बाद मुझे क्या करना है, I will create a dictionary out of it. So all data equal to, मैं क्या करता हूँ, pd dot data frame, and by using the dictionary I will create this data frame labels dict, and I will and then shit क्या हो गया, labels dict, and then I will do all data. If you look at it, I have 434 rows and 7 columns. चलेगा. एंड आई गॉट, यहाँ पे 434 क्यों आया, क्योंकि we have already appended one time here. So let me do this one, initiate again. Let me initiate this label dictionary again. अभी label dictionary खाली है. And then let me do this complete for loop, and then we will do this. जितना हमारा इमेजेस है उतना डेटा आना चाहिए. So now we have 433 rows. ठीक है. We have this, we have converted all the XML information into the data frame. We have image path है, x min, y min, x max, y max, image width and height. ठीक है. अभी now I will do a test train split. जहाँ पे whenever we do the machine learning model, we want to do the text train split. So इसके लिए from sklearn dot model selection import train test split. ठीक है. So I will do train comma test equal to, I will use this train test split, and I will give all data, and then I will keep 0.1% train, I mean I can keep point. पहले हम ऐसे स्प्लिट करते हैं. ठीक है, हम स्प्लिट करते हैं ट्रेन, लेट मी कमेंट दिस, ट्रेन वैल एंड टेस्ट, इसका स्प्लिट करते हैं हम. ठीक है, चलेगा. सो हम लेट्स डू ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, ऑल डेटा साइज एंड टेस्ट साइज देते हैं 1/10 और 0.1. यू कुड यूज एनीथिंग, 1/10 भी कर सकते हैं और 0.1 भी कर सकते हैं. एंड रैंडम स्टेट इज इक्वल टू 42. ठीक है. एंड देन वी विल अगेन स्प्लिट दिस इनटू ट्रेन एंड वैल. ट्रेन एंड वैल, इसको क्या, ट्रेन का वैल वैलिडेशन डेटा, इसको कैसे स्प्लिट करना है, ट्रेन को स्प्लिट करना पड़ेगा, टेस्ट को ऑलरेडी स्प्लिट कर दिया ना हमने. सो आई विल कॉपी दिस, एंड यहाँ पे आई विल गिव द ट्रेन, एंड देन आई विल डू ट्रेन साइज इक्वल टू 8/9, 8 out of 9 points, and then random state equal to 42. So if I do print of print f, and then हमने क्या प्रिंट करना है, लेंथ ऑफ train equal to, we will have to add this length of train, and then we will do length of val, and then equal to, we will do length of val, and then we will do it length of test, and this equal to length of test. सो हम सब समझ में आ गया का. ओके, मेरे पास ट्रेनिंग इमेज 345 इमेजेस है, वैलिडेशन 44 है, टेस्ट 44 इमेजेस है. हमने स्प्लिट भी कर दिया. ठीक है. सो लेट्स प्रिंट ट्रेन. सो इट इज अ डेटा फ्रेम एक्चुअली. सो मेरे पास ये डेटा फ्रेम है, चलेगा. नाउ हमें क्या करना है, वी वांट टू कन्वर्ट दीज इमेज इनटू ए योलो फॉर्मेट. योलो फॉर्मेट पे कन्वर्ट करना है, एंड वी वांट टू सेव दैट इन ए टेक्स्ट फाइल एज वेल. ठीक है. So YOLO expects the data to be in text format.
XML से हम टेक्स्ट फॉर्मेट कैसे करते देखते हैं. So इसके लिए हम एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, डिफाइन मेक. Sorry, one more thing that I want to talk about is this one, YOLO folder structure. If you look at the images, so हमारे पास अगर हम YOLO को ट्रेन कर रहे हैं, then we want to have directory something like this. एक डायरेक्टरी है, उसके अंदर ट्रेन और वैलिड, सॉरी, हाँ यस, ऐसे वाला चाहिए हमें. सो हमारे पास डेटा सेट के अंदर ट्रेन डेटा सेट है और वैलिडेशन डेटा सेट है. इसके अंदर इमेज है, इमेज के अंदर सारे इमेज है, लेबल्स के अंदर सारा टेक्स्ट डेटा होना चाहिए. सो वी वांट टू कन्वर्ट आवर डेटा इनटू दिस डायरेक्टरी फॉर्मेट. ठीक है, कैसे? लेट मी शो यू वन इमेज. मेरे पास यही इमेज कर सकते हैं एक्चुअली. सो वी वांट टू डू इट. एक ट्रेन डेटा सेट है, वैलिडेशन डेटा सेट है एंड टेस्ट डेटा सेट है. उसके अंदर दो फोल्डर है, इमेजेस और लेबल्स. इमेजेस के अंदर सारे इमेजेस, लेबल्स के अंदर सारे लेबल्स विच इज इन टेक्स्ट फॉर्मेट चाहिए. सो उस फॉर्मेट पे कन्वर्ट करना पड़ेगा हमारे डेटा के लिए पहले. सो उसके लिए हम एक फंक्शन लिख देते हैं, मेक स्प्लिट फोल्डर इन योलो फॉर्मेट, इन योलो format. And इसको we will pass some variables. So let's say split name and then split data frame. Data frame pass करते हैं and we will do the processing on top of this data frame. ठीक है. So पहले हम क्या create करना है? We need to create a directory such that it has multiple sections, labels, train और validation और test, and then उसके अंदर labels और images होना चाहिए. So इसके लिए हम OS module have some doubts. What is random state? So random state is like every time it will shuffle the data and take the images, and random state will ensure that if you execute one more time it will do the same kind of shuffling. So if you want to replicate the details again and again, you can use the random state. Agar random state 0 rakha, and next time if you use random state 2, and if you look at the data that you got the output, ये दोनों different रखता है. So you need to keep the same random state if you want to replicate the results, but it is not mandatory. Label image can directly give in walk and YOLO format, even normalized in text files. Label image can directly give in VOC and YOLO format, even normalized in text files. समझ में नहीं आया मुझे. Can you explain that in detail, Funny? ठीक है, हम क्या करने वाले हैं? Labels path os dot path dot join हमें क्या करना है? We will create a folder called dataset. If you look at it here, we want a folder called datasets. उसके अंदर ये सारे होना चाहिए. So उसके लिए हम क्या करने वाले? We will create a folder called datasets. ठीक है. And उसके अंदर we will create a folder called cars license plate new. Let's take something like that. And then we want to do a split name. Yeah, this split name will be train or validation or anything. And then इसके अंदर हमें चाहिए labels. So I will copy the same thing again, and then I will do images path, and यहाँ पे देंगे images. ठीक है, मैं दो डायरेक्टरी क्रिएट कर रहा हूँ. When we execute this, you will get to know क्या कैसे क्रिएट कर रहे हैं. So os dot mk make directories. अगर ये डायरेक्टरी नहीं है तो we want to create the directory labels path, and then we will also create the image path directory as well. इसके लिए image path देते हैं यहाँ पे. ठीक है. एंड उसके बाद हम हर एक डेटा फ्रेम को we want to pass through all of these values and convert this into YOLO format. So हम क्या करने वाले हैं? For comma row in df dot split d, यहाँ पे df है split df dot iter rows. ठीक है, हर एक रो आता है यहाँ पे. एंड वी वांट टू डू द मॉडिफिकेशंस. इमेज नेम comma image extension equal to os dot path dot split text, and then here we will use os dot path dot base name, and then we will pass
रो ऑफ सॉरी, यहाँ पे वी विल टेक द इमेज, यहाँ पे इमेज path. ठीक है, I will explain what this is. So if I copy this here and if I pass this, uh, so if I pass this here dot png, let's take it like this, and if I execute os dot, क्या हो गया, हैज नो attribute split text, स्प्लिट टेक्स्ट नहीं है, अच्छा स्प्लिट दो बार नहीं है, स्प्लिट टेक्स्ट, आई गेट दिस वन, कार्स वन है एंड पीएनजी अलग अलग आ गया मुझे, दिस इज व्हाट इट इज हैपनिंग हियर, ठीक है, लेट मी डू दिस हियर, सो इमेज नेम पे कार का कार्स वन आएगा एंड एक्सटेंशन उसका क्या है, पीएन डॉट पीएनजी आएगा, ठीक है, एंड देन हमने क्या करने वाला है, वी वांट टू कैलकुलेट द योलो सेंटर एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ, सो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, एक्स सेंटर, सो लेट्स एक्स, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिटेक्शन टास्क पे ये दिस इज व्हाट मेजर वन, यू नीड टू डू द फॉर्मेट, आई मीन प्रोसेस यू आर डूइंग no is directly done by labeling executable, it gives text in normalized format during image annotation. Acha, I mean we can do that funny, but we have the data in XML format in Pascal work, इसलिए हमें ये करना पड़ेगा, अगर if you can directly get the format in YOLO वो बहुत अच्छा है, we are taking, I'm explaining this because if अगर हमारे पास YOLO का नहीं है तो then we need to do these things, है ना, x center इक्वल टू हमें क्या करना है, इस जैसे हमने कैलकुलेट किया, वी वांट टू डू रो ऑफ एक्स मिन प्लस रो ऑफ एक्स मैक्स डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा, रो ऑफ एक्स मिन कमा रो ऑफ एक्स मैक्स डिवाइडेड बाय 2, and we will also divided by a row of image width. Why we are doing this, because we want to normalize the values, ठीक है, and then I will copy this same thing multiple times, and this will be the y center, and this will be y min plus y max divided by height, and then I want to get the width and I want to get the height, and यहाँ पे क्या करना है, width और height लेने के लिए x max minus x min, x max minus x min करना पड़ेगा, एंड डिवाइडेड बाय 2 नहीं रहेगा, यहाँ पे width को डिवाइड करना पड़ेगा, एंड यहाँ पे y min y max minus y min, एंड यहाँ डिवाइडेड बाय 2 नहीं रहेगा, एंड देन वी विल डिवाइड बाय हाइट, ठीक है, एंड यहाँ पे हमारा सारे एक्स सेंटर वाई सेंटर विड्थ और हाइट आएगा, एंड हमें क्या करना है अभी, वी नीड टू सेव दिस इन अ टेक्स्ट फॉर्मेट, सो इसके लिए लेबल पाथ इक्वल टू os डॉट पाथ डॉट ज्वाइन, हमें एक क्रिएट करते हैं लेबल्स, I will save the, I will share you this notebook after this session, and so don't worry, f dot image name, so image name use करके we are try to create a text file actually, ठीक है, dot text, and यहाँ पे we need to save this x center y center and all of these things, so we will open this file with open label path, इसको open करते हैं, and if you are doing write operation, if it is not present you will try to create the file itself, create करने के बाद file dot write, what we want to write, we want to write all of the variables, so f 0, and we want to write x center क्या है, x center, and we want this to be in 0.4 decimals, 4f चलेगा, and then we want to write y center, and then with this will also be in 0.4f format, and then we want to write the width, and this will also be in 4 decimals, and then we also want to write height, and this would be
पूरा slash n, and next time we want to write it in the next line, so इसलिए slash n है at the end, ठीक है. And then हमें we want to also for copy the image actually, so shuttle dot copy. so हम क्या करने वाले हैं, रो ऑफ इस इमेज पाथ को लेते हैं हम, डाटा फ्रेम पे इमेज पाथ है ना, इमेज पाथ, एंड इसको कहाँ पेस्ट करते हैं, os डॉट पाथ डॉट ज्वाइन इमेजेस पाथ कमा इमेज नेम प्लस इमेज एक्सटेंशन, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है. एंड देन we will do, once the for loop ends, we will do a print statement f created images path, and then and we'll do labels path, ठीक है. सो हमें क्या करने वाला है यहाँ पे, सो वी विल क्रिएट मल्टीपल डायरेक्टरीज, एंड इसके अंदर वी विल डू द फॉर्मेटिंग ऑफ योलो फॉर्मेट, एंड देन वी आर ट्राइंग टू सेव इट इनसाइड टेक्स्ट फॉर्मेट, एंड ये होने के बाद वी विल एग्जीक्यूट दिस. सो इस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं. सिंटैक्स एरर क्या हो गया, सिंटैक्स एरर क्यों, अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग लिटरल, अच्छा किधर पे मैंने कुछ क्लोज नहीं किया क्या, अनटर्मिनेटेड लेटर स्ट्रिंग डेटेड लाइन 23, क्या हो गया. सो लेट मी डू दिस, अच्छा ये हो गया. फिर प्रिंट को क्या देखा है, क्या प्रॉब्लम आ रहा है, अच्छा इसको मैंने क्लोज नहीं किया, ठीक है, देखा, हो गया. नाउ हम क्या करने वाला है, वी नीड टू कॉल दिस फंक्शन, एंड वी वांट टू कॉल दिस फंक्शन फॉर train data set. So we'll pass the train data frame, and we will call this function for validation and test as well. So we will do val and we will do test. यहाँ पे val देते हैं and यहाँ पे test देते हैं. Let's execute this. वो import OS has no attribute make dir. अच्छा it is make dirs actually. So let's execute this and let's execute this. अभी चल रहा है. सो यहाँ पे डेटा सेट्स क्रिएट हो गया, एंड इफ यू लुक एट दिस केगल वर्किंग के अंदर डेटा सेट्स आ गया, इसके अंदर ये सारे आ गए. इफ यू लुक एट इट, कार लाइसेंस प्लेट न्यू, इसके अंदर ट्रेन वैलिडेशन टेस्ट आ गया, इसके अंदर हमारे पास लेबल्स और इमेजेस एंड लेबल्स और इमेजेस एंड लेबल्स और इमेजेस, ठीक है. एंड इफ यू लुक एट दिस पिक्चर, वी ऑल्सो नीड टू क्रिएट ए एमएल फाइल एक्चुअली. एमएल फाइल क्या होने वाला है, एमएल फाइल विल डिफाइन द स्ट्रक्चर, जहां पे वो स्ट्रक्चर है वी वांट टू लेट द मॉडल नो दैट इस स्ट्रक्चर पे हमारा डेटा है, इसलिए हमें एक एमएल फाइल क्रिएट करना पड़ेगा. उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, गिव मी मिनट. डेटा डेटा सेट्स YAML इक्वल टू, हम वी वांट टू डिफाइन वट एवर हमने किया वो सारे यहाँ पे कर लेते हैं. दिस विल बी पाथ, पाथ कहाँ है, दिस विल बी दिस कार लाइसेंस प्लेट न्यू है, कार लाइसेंस प्लेट न्यू, एंड देन वी हैव द ट्रेन, ट्रेन पे वी हैव ट्रेन स्लैश इमेजेस, and then val we have val slash images, and then test we have test slash images, ठीक है. एंड हमारे पास नंबर ऑफ क्लासेस कितना है, नंबर एन वी कैन डायरेक्टली डू एनसी, एनसी इक्वल टू एनसी 1 है. हमारे पास एक ही क्लास है इसलिए 1 है. अगर अब आपके पास बहुत सारे हैं एंड वी कैन क्रिएट मल्टीपल नेम्स, नेम्स हम क्या करने वाले हैं, लाइसेंस प्लेट LICENSC प्लेट, इसको हम लेबल दे रहे हैं लाइसेंस प्लेट, ठीक है. एंड दिस एमएल फाइल वी वांट टू सेव इट इनसाइड द सेम पाथ. हम क्या करने वाले, विथ ओपन we will create the file called data sets.ml. You can create any file, datasets.ml,
via ml, sorry, क्या हो रहा है, and will open it in the right format and as file, and यहाँ पे file dot write, जो कुछ भी हमने क्रिएट किया वो कर लेते, ए राइट कर देते, ठीक है. So we will have let me refresh this. So we have datasets.ml फाइल भी आ गया. अभी हम क्या करने वाले, लेट्स इंपोर्ट फ्रॉम अल्ट्रालिटिक्स, इंपोर्ट योलो, योलो इंपोर्ट करते हैं, ठीक है. एंड वी विल लोड द प्री ट्रेन्ड मॉडल फर्स्ट, मॉडल इक्वल टू YOLO, and we have the weights available, which is YOLO V8 and we will use nano model. We can have multiple models like large, Excel, and all that stuff. But for this use case, we will use nano model because it will be very easy to train. ज़्यादा time नहीं लेगा. If you look at it, only 6.23 MB है. You can try the large model and everything. हमारे पास बहुत कम डेटा है, इसलिए हम nano model use कर रहे हैं. हम क्या करने वाले हैं, we will do a model dot train. And train कैसे करना है, so we have the data equal to, हमारे पास we are specifying हमारे पास डेटा इसके अंदर है, so we will pass this datasets.ml file, data equal to datasets.ml, and then we will give epochs. Let's train for 100 epochs, and then sorry, 100 epochs, and then we will say batch size equal to 16, हर batch 16 images ले लो. And then we will say device equal to CUDA because we have CUDA available, and then we will say image size is equal to 320, 320 को resize करो, and then cache equal to true. This will speed up the procedure, ठीक है. And we will do a model dot train. So let's execute this. क्या हो गया, dataset sample doesn't exist, क्यों, why it doesn't exist, datasets.ml. I think there's a typo in the before, so let's wait for it to run. अभी भी चल रहा है, it will take some time to execute. हाँ, now I want to talk about something called as 1DB. So 1DB is basically a it is integrated in Kaggle. Actually, it is a UI for which you can track all of your experiments actually. So for that, what you need to do is you need to open this 1DB, click on this icon, link that we have here, and यहाँ पे you, if you don't have the account, please try to log in with the account. मैं अभी एक account से log in कर रहा हूँ actually, and यहाँ पे you will find the API key actually. कहाँ गया, so where you can find the API key in our browser here, and यहाँ पे आपका API key मिल जाएगा यार. So this is my API key. I will copy this and I will paste it here, and I will click on enter. So what it will do is it is giving permissions to your 1DB account such that you can track all of your experiments there. चाहे तो यहाँ पे भी experiment कर सकते हैं. If you look at it here, I have all of these metrics that are being done 100 epochs के लिए. So it is just a better visualization actually. And then once you start that, now the model is training actually, it is caching the images, and बहुत सारे optimizations करते हैं. Let's wait for some time. देखो epoch 1 चालू हो गया, 100 epochs चल रहे हैं हम, and we are like बहुत fastly हो रहे हैं epochs. I mean within 4 to 5 seconds every epoch is getting trained because we have very less number of images. And if you look at this map that we have talked about, map at 50 and map at 52.995, we have all of this map. You can track all of this. have map decrease हो गया, उसके बाद increase हो गया, उसके बाद बहुत increase हो गया, उसके बाद decrease हो गया. map is it is learning a lot of stuff. You can look at all the losses that we have learned in the previous session: box loss, classifier loss, and GP memory कितना यूज कर रहे हैं, epoch क्या है. So you get all of these statistics
and all of these metrics will be saved under this experiment here यहाँ पे 1 dB पे अगर चाहिए तो you can look at it यहाँ पे कर सकते हैं but if you are able to do this from here it will be better as well. Abhi let's take some time to get the doubts running. Any queries so far? We are doing that model training right now. Any queries? How many people we have? We have 16 participants. ठीक है. So while the model is getting trained, can you guys give the feedback? क्योंकि anyway बहुत हमारे पास बहुत सारा टाइम मॉडल ट्रेन करने के लिए है. So let me everyone, if you are enjoying these kind of sessions, live coding sessions enjoy कर रहे हैं तो and once the model is trained, we will also look at the predictions and how we will also look at how to save the model as well. And we will also print the predictions. So हम एक image लेके उसका उसके ऊपर predictions print भी करते हैं हम. So far अच्छा लग रहा है, कुछ बुरा लग रहा है, कुछ कुछ तो बताओ. So that I will also be feel interacted. Excellent, ठीक है. हाँ, give me a minute. I will just get some water. You guys keep posting the chat. I will come and read it. Chalo, we are back. So the earlier thing that we do in YAML and directory was pre-processing actually, right? Where with the transformation of data. Yes. So you are saying, so the YAML and all of that structure is needed for the YOLO to get trained. So सारा pre-processing steps है. YOLO को ready तैयारी रखने के लिए बस. So you are saying that if we make these types of end-to-end project till deployment, then we can put that in CV. And in that case, the interviewer may ask this not real life case work related to any
companies how to mitigate that problem. वो तो दिक्कत है. आई मीन इफ यू हैव सम वर्किंग एक्सपीरियंस, अब क्या कर सकते हैं, ये थोड़ा इलीगल है. यू कैन फेक सम प्रोजेक्ट. अगर यू कैन टॉक टू सम पीपल हु आर इन द कंपनी हु आर वर्किंग एज डेटा साइंटिस्ट, एंड अगर वो शेयर कर रहे हैं, यू कैन टेक दोज प्रोजेक्ट्स एंड यू कैन ट्राई टू इम्प्लीमेंट डमी प्रोजेक्ट समथिंग सिमिलर लाइक दैट, एंड बोल सकते हैं हमें इस कंपनी पे इम्प्लीमेंट किया. क्योंकि इंटरव्यूअर थोड़ी चेक करेगा, आप किया नहीं. इफ यू कैन आंसर ऑल द थिंग्स प्रॉपरली एंड वो मस्त है. ये थोड़ा गलत है बट करना पड़ेगा. So let me go back to the screen share here. ठीक है. वी कितना अप्रॉक्स हो गया, 100 अप्रॉक्स हो गया यहाँ पे. देखो बहुत 10 मिनट पे हो गया पूरा 100 अप्रॉक्स. एंड वी हैव ऑल द लॉग्स, एंड यू हैव द ऑल द लॉग्स एट दिस हियर. एंड यहाँ पे यू कैन ट्रैक ऑल द मेट्रिक्स दैट व्हाट एवर हैपेंड सो फार. F1 करो कैसे है, वैलिडेशन कैसे है, एंड यू हैव एमएपी कैसे चल रहा है, रिकॉल कैसे चल रहा है. सो एवरीथिंग इज अच्छा है. पहले बहुत ऊपर नीचे हो रहा था, बाद में स्टेबल हो गया एक्चुअली. वो एक्चुअली अच्छा है. एंड यू हैव ऑल द मॉडल्स, ट्रेनिंग डेटा सेट कैसे है, वैलिडेशन का कैसे हुआ, वैलिडेशन लॉस क्या क्या है, एंड देन यू हैव सिस्टम लॉस. बहुत सारी चीजें यू कैन गो थ्रू दीज ऑल ऑफ दीज थिंग्स. बट जितना मुझे पता है कि यहाँ पे एमएपी बहुत अच्छा आया. So if you look at this last session, so we have MAP of 0.914 at MAP 50, but we have 0.54 at MAP 50 and 0.95. ये भी अच्छा है actually. 0.5 का 0.5 के ऊपर अच्छा है actually, because we have very less amount of data. अभी हम क्या करना है, हमें मॉडल को ट्रेन कर दिया. नाउ वी नीड टू प्रिडिक्ट द इमेजेस, राइट. सो इसके लिए हम एक फंक्शन करते हैं. सो यहाँ पे इफ यू लुक एट इट, वन मोर चीज, एक और चीज है. लेट मी एक्सपैंड दिस हियर, एंड इफ आई क्लिक ऑन दिस, यहाँ पे एक नया सेट आ गया, रन्स. रन्स के अंदर आपको सारे इंफॉर्मेशन सेव होता है. एंड इफ यू लुक एट इट, यू हैव ऑल द इंफॉर्मेशन हियर. वेट्स, ऑल द वेट्स, यहाँ पे वेट्स भी सेव हो गया एक्चुअली. लास्ट पॉइंट, एंड दिस इज द बेस्ट वन, विच इज द 6.2 MB का वेट्स है. यू कैन सेव दिस वेट्स एंड यू कैन लोड द मॉडल अगेन बाद में, वो हम देखते हो. यहाँ पे यू हैव ऑल द इमेजेस. पीआर करो कैसे है, इफ यू क्लिक कर पी करो पीएनजी, यू कैन डाउनलोड दिस एंड यू कैन लुक एट इट. बट हमें यहाँ पे यूज करेंगे रिजल्ट्स डॉट सी एस वी. ठीक है. सो रिजल्ट डॉट सी एस वी यूज करके वी कैन डू द प्रिडिक्शन. सो प्रिडिक्शन नहीं है, वी कैन जस्ट डू द प्लॉटिंग ऑफ द मैप एक्चुअली. सो यहाँ पे लॉग डायरेक्टरी इक्वल टू, कहाँ से हो गया, मैक्स ग्लोब रन्स के अंदर है. सो लेट मी क्लिक हियर. रन्स के अंदर, डिटेक्ट के अंदर है ना, रन्स के अंदर, एंड देन विल डू डिटेक्ट के अंदर है ट्रेन स्टार. क्योंकि यहाँ पे देखे हो तो बहुत, वी हैव ट्रेन, ट्रेन टू, ट्रेन दी मल्टीपल है. बट आई वांट टू गेट द लेटेस्ट वन, इसलिए वी विल डू द सॉर्टेड एंड की देते हैं द नंबर इन द स्ट्रिंग, द नंबर इन द स्ट्रिंग फंक्शन. And then we will do results equal to, we want to read the csv file, so we'll do pd dot read csv, pd dot give me a minute, sorry, pd dot read csv. and csv के अंदर कहाँ रीड कर रहे हैं, we want to read that os dot path dot join, and we want to find it under this log directory के अंदर results dot csv है, results dot csv. एंड हम ये रीड करते हैं. एंड इफ आई प्रिंट रिजल्ट्स, आई विल गेट ए डेटा फ्रेम लाइक दिस. क्या हो गया, आई विल गेट दिस वन. सो हर एक एपॉक के लिए ट्रेन लॉस मेट्रिक्स, सारे मेट्रिक्स यहाँ पे आ गया. यू कैन लुक एट दिस एंड यू कैन डू ए लॉट ऑफ प्लॉटिंग एज वेल. सो हमें क्या करने वाले हैं अभी, रिजल्ट्स डॉट कॉलम्स इक्वल टू results dot
कॉलम्स डॉट स्ट्रिंग डॉट स्ट्रिप। इन्हीं कुछ कुछ कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे कुछ स्पेस वगैरह आ जाता है, इसलिए हमने वो निकाल रहे हैं, बस कुछ भी नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। एपॉक्स इक्वल टू, तो मेरे पास कितना एपॉक्स है, रिजल्ट्स डॉट इंडेक्स +1। क्यों +1 है, यहाँ पे देखो 99 है, बट हमारा एपॉक्स कितना है, 100 है, इसलिए हम +1 कर रहे हैं यहाँ पे। इफ वी क्लिक ऑन एपॉक्स, प्रिंट एपॉक्स, ये देखो स्टार्ट 1 है, स्टॉप 101 है, स्टेप 1 है, इट इज 100 तक है। सो व्हाई डू वी नीड दिस, वी वांट टू डू ए प्लॉटिंग एक्चुअली, तो इट इज जस्ट, एंड हम क्या प्लॉट करेंगे, MAP 0.5 को करेंगे, एंड इट इज अंडर विच कॉलम, इफ यू लुक एट इट, df डॉट कॉलम्स प्रिंट करते हैं, रिजल्ट्स डॉट कॉलम्स प्रिंट करते हैं, एंड यू हैव मल्टीपल कॉलम्स है यहाँ पे, मैट्रिक्स MAP 50 भी है, सो दिस इज द कॉलम, इसके अंदर हमारा पास डेटा है। And then we have to do take this MAP 0.5, and we want to 0.95, and यहाँ पे results, and this will be under this one। ठीक है, ये दोनों ले लिए हमने। now we will do the plt dot figure, let's get the figure size equal to, let's keep it 10/5, and then plt dot plot, we will plot epochs, and then we will also plot this one MAP 0.05, and then label करते हैं, label equal to, we will keep it as MAP 50, MAP @ 50, 0.5 actually, 50 नहीं है, and then we will copy the same line, and then we will do the plotting for this one as well, and we will keep it as 0.5 underscore 0.95, and then we will do plt dot x label, and we will do epoch, and plt dot y label, this will be accuracy, you can keep it as mean average precision, but जो कुछ भी है, plt dot title दे देते हैं, this will be accuracy over epochs, accuracy over epochs, and then हम क्या करते हैं, plt dot legend enable करते हैं, and plt dot grid, आई मीन ये मैंडेटरी नहीं है, चाहिए तो ऐड कर सकते हैं, नहीं है तो नहीं है, एंड देन plt डॉट शो। इतना नहीं करना है तो आपको क्या हो गया, की एरर मैट्रिक्स, क्यों क्या हो गया, की एरर क्यों पूछ रहे, दिस इज नॉट रीडिंग क्या, अच्छा इसको की एरर आ रहा है, क्या हो गया, अच्छा देर इज अ लीडिंग स्पेस, आ 1 मिनट, क्या हो गया, ये एग्जीक्यूट नहीं किया क्या हमने, फिर भी क्यों दे रहे हैं ऐसे एरर, सो दिस इज द होल कॉलम, हाँ so थोड़ा कुछ तो गलत हुआ है यहाँ पे, एंड दिस विल बी द होल कॉलम, एंड दिस विल बी द होल कॉलम, ये देखो वी कैन प्लॉट समथिंग लाइक दिस, बट द सेम प्लॉट यू विल गेट फ्रॉम हियर एज वेल, सो अगर करना है तो यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, नहीं है तो यू कैन डू यूज दैट 1 dB एज वेल। ठीक है, सो नाउ वी हैव द थिंग्स, नाउ वी कैन सेव द मॉडल एक्चुअली, मॉडल डॉट सेव, एंड आई विल से बेस्ट लाइसेंस प्लेट
model डॉट पीटी. सो इट इज इन पीटी फॉर्मेट. अगर चाहिए तो यहाँ पे ऑलरेडी है. ट्रेन टू के अंदर इफ यू लुक एट वेट्स, वेट्स के अंदर बेस्ट पीटी है, यू कैन यूज दिस. और एल्स यू कैन सेव द मॉडल सेपरेटली. ऐसा कुछ नहीं है, यू कैन सेव इट सेपरेटली, यहाँ पे आ जाएगा. if you look at it here, best license plate model.pt, about 12.94 MB. You can download this model बाद में. हम बाद में डाउनलोड करते हैं, सो डोंट वरी. अभी क्या करने वाले हैं, वी वांट टू फाइंड द प्रेडिक्शंस. ठीक है. सो प्रेडिक्शंस के लिए हम क्या करना है, रिजल्ट्स इक्वल टू मॉडल डॉट प्रिडिक्ट. यहाँ पे एक इमेज देते हैं. ठीक है, हमारे पास इमेजेस है. एक इमेज लेते हैं एंड वी विल ट्राई टू पास इट हियर एंड देन क्लिक ऑन रिजल्ट्स. ये क्या देता है, इफ यू लुक एट इट, 1.4 मिली सेकेंड्स के अंदर प्रिडिक्शन हो गया. बहुत बहुत ही अच्छा है. सो ये ओरिजिनल इमेज अरे है. यहाँ पे इन्फरेंस टाइम आ गया, प्रोबेबिलिटीज नन आ गया. क्यों? रन्स डिटेक्ट ट्रेन 22 से क्या कर रहे हैं, रन्स एंड देन वी हैव डिटेक्ट. एंड इसके अंदर ट्रेन ट्रेन 22 कहाँ है. लेट मी रिफ्रेश दिस. सेव डायरेक्टरी रन्स डिटेक्ट कहाँ गया, ये दो भाई साहब. सो ओबीबी बॉक्सेस की पॉइंट्स नॉन मास्क नॉन नेम जीरो कमा लाइसेंस प्लेट, ये एरे आ गया. फिर इज और डायरेक्शन ओरिजिनल पाथ एंड प्रोबेबिलिटी स्पीड सारे आ गया. लेट मी रीड दिस. os dot list directory and I will pass this. ट्रेन टू एंड ट्रेन 22 कहाँ से आया पता नहीं, बट देखते हैं. ठीक है. सो हमें रिजल्ट से बॉक्स को उठाना पड़ेगा. सो फॉर result in results, for box in result dot boxes, print box, and I will do a break here and I will do a break after this. ये देखो हमारा टेंसर आ गया. सो दिस इज द प्रेडिक्शन एक्चुअली. ठीक है. this prediction is basically where the object lies inside that. So हमें इसको निकालना पड़ेगा एक्स वाई को. सो दिस वी कैन टेक इट एंड वी. सो यहाँ पे देखो यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मेट्स है. एक्स वाई विड्थ एंड हाइट, ये एक टेंसर डिडक्शन दिया. एंड वी आल्सो एक्स वाई विड्थ हाइट एंड नॉर्मलाइज्ड वन, वी हैव द नॉर्मलाइज्ड वन. यहाँ पे एक्स मिन वाई, एक्स मैक्स वाई मैक्स, एक्स मिन वाई मिन चारों दे दिया. यहाँ पे दिस वंस एंड एक्स वाई, एक्स मिन वाई मिन, एक्स मैक्स वाई मैक्स, ऑल द नॉर्मलाइज्ड वंस. हम ये सारे उठा के वी विल डू इट, प्रिंट दिस ऑन द इमेज इटसेल्फ. ठीक है. उसके लिए हम क्या करना है, वी वांट टू टेक दिस वैल्यूज. सो x1 y1 x2 y2 इक्वल टू व्हाट वी वांट टू टेक, वी वांट टू टेक xy ये सारा लेते हैं. ठीक है. दिस वन वी विल टेक इट. मैप int xy and box dot xy and we will get the values inside this 0. ठीक है. And then we will also get the confidence score. Confidence equal to box dot confidence of 0. So we have the confidence score as well.
71% कॉन्फिडेंट है दैट इट इज ए लाइसेंस प्लेट। एंड हम क्या करने वाले हैं, cb2 डॉट रेक्टेंगल, रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं, cb2 डॉट रेक्टेंगल, एंड इस पे क्या क्या भेजना है, वी वांट टू पास द इमेज। सो इमेज विल बी, यहाँ पे हम कौन सा इमेज दिया, यहाँ पे इसको दिया हमने, वी वांट टू रीड दिस एक्चुअली। सो इमेज, सो लेट्स रीड दिस, image equal to cv2 डॉट आई एम रीड, हम ये इमेज को रीड कर देते हैं, ठीक है। एंड देन we will do convert this into black and white, I mean cvt color, cv2 dot cvt color image comma, we will convert this from blue bgr to rgb, bgr to rgb, ठीक है। so let's execute this। so image को read हो गया, and we want to on top of this image we want to draw these ones, so we'll pass x1 comma y1, and we will also pass x2 comma y2। टाइम कितना ऑफ 7:30 हुआ, ठीक है, ऑलमोस्ट हो गया हमारा अभी। एंड देन वी विल गिव द वैल्यूज 0 to 255 के बीच में है, एंड RGB चैनल 0 है, एंड देन 2, एंड देन वी विल ऑल्सो ऐड द कॉन्फिडेंस स्कोर। सो cv2 डॉट पुट टेक्स्ट कॉन्फिडेंस स्कोर के लिए है, एंड किस पे करना है, वी वांट टू कीप इट ऑन द इमेज इटसेल्फ, एंड क्या करना है, वी वांट टू ऐड द कॉन्फिडेंस स्कोर, सो दिस इज इनसाइड दिस कॉन्फिडेंस, and we will multiply it at 100, and we will keep it in 2f format. Dot 2f we want to do and only two ones, and then give me a minute, and we will have it here 2f format पे डाल दिया, and we will also say percentage, ठीक है, we want to give it as a percentage, and then we will pass x1, कहाँ डालना है, x1 y1, and x1 y1 के ऊपर डालना पड़ेगा, इसलिए दिस इज जस्ट अ पोजीशन है, कहाँ डालना है। एंड देन वी कैन डिफाइन द फॉन्ट एज वेल, यूजुअली cv2 डॉट फॉन्ट, हर्षे सिंप्लेक्स डाल देते हैं, हर्षे सिंप्लेक्स, एंड दिस फॉन्ट वी विल कीप इट, एंड we'll pass this values 255 comma 0 comma 0 comma 2, चलेगा। now let's do this plt dot im show, plt dot im show, and we'll pass the image, and plt dot axis will turn off the axis, पहले हमने चालू किया, and then we will do plt dot show। so let's see अगर कुछ error आ गया, कुछ नया हुआ, देखते हैं। if you look at it, हमारा इमेज ये है, हमारा इमेज दिस वन, एंड वी डिड द प्रेडिक्शंस हियर, एंड उस प्रेडिक्शंस को हमें यहाँ पे डाल दिया, एंड वी गॉट 71.8% श्योर है फ्रॉम दिस वैल्यू इट इज अ लाइसेंस प्लेट। We can get another image as well if we click on any other image, so let's take this one, so let's do cars 20, and let's exit, and then we also want to do the prediction as well, so यहाँ पे भी, so let's do it here, एंड यहाँ पे भी कार्स 20 के ऊपर प्रेडिक्शंस करते हैं, ठीक है। एंड देन वी विल डू दिस वन, एंड यू कैन सी प्रेडिक्ट कर दिया, एंड लेट्स टेक कार 70 एंड डू दिस वन, एंड लुक एट इट, वी हैव मल्टीपल प्रेडिक्शंस एज वेल, ये सारे 62% कंफर्म्ड है, ये सारे आ गया। नाउ वी हैव डन सक्सेसफुली द ऑब्जेक्ट डिटेक्शन यूजिंग योलो फॉर द नंबर प्लेट डिटेक्शन, ठीक है।
एंड हमें अभी क्या करना है, वी कैन ट्राई टू कन्वर्ट दिस नंबर प्लेट इनटू ए टेक्स्ट फॉर्मेट एज वेल. उसके लिए वी हैव टू यूज समथिंग कॉल्ड एज OCR, ऑब्जेक्ट कैरेक्टर रिकग्निशन. सो ये क्या करते हैं, दिस विल convert whatever the text that we give the input, sorry, whatever the image that we give the input, it will convert into a text. इसके लिए text extraction यूज कर रहे हैं. So we'll not go through in detail regarding the text extraction, क्योंकि it will be बहुत बड़ा और एक कोर्स हो जाएगा. बट लेट्स डू सम मोर एग्जांपल यहाँ पे. लेट्स डू टेस्ट, एक टेस्ट डेटा पे देखते हैं ना एक बार. डेटा सेट्स के अंदर वन लार लाइसेंस प्लेट, यहाँ पे टेस्ट के अंदर एक लेते हैं. टेस्ट के अंदर एक इमेज लेते हैं, इमेजेस. एंड लेट्स टेक cars 152.png. So this we will pass it here, and this we will pass it here, and then we will do the results. So we have 84.75% sure it is a number plate. Now see image को let's try to convert into a text using a package called PyTesseract that will use OCR internally, so that we will not go the details कैसे काम करते हैं, but you can go through it. So pip3 install, उसके लिए हम PyTesseract चाहिए. So let's do this. थोड़ा टाइम ले रहे हैं. So we have 12 people only. पता नहीं यार, people are not interested in coding part. क्या coding is the major part यार. I mean वो भी important part है. So we will do import PyTesseract. So let's import this, and from PyTesseract, surprisingly detects so well. Yes, that is what the magic of YOLO is. YOLO is too good. It is a production level actually. Output. So we'll import both of these things. एंड देन हमने क्या करने वाले हैं, नाउ वॉट एवर द, इफ यू लुक एट इट, वॉट एवर द इमेज दैट वी गेट, ये सारे कोऑर्डिनेट्स है उस बॉन्डिंग बॉक्स के लिए. उस कोऑर्डिनेट्स के अंदर जो कुछ भी इमेज रहता है, उस इमेज को हमें पास करना है OCR के अंदर. सो इट विल एक्सट्रैक्ट द टेक्स्ट. इफ यू लुक एट इट, यू हैव दिस बॉन्डिंग बॉक्स है ना, इसके अंदर इमेज है ना, क्रॉप करके वो क्रॉप्ड इमेज भेजना पड़ेगा OCR के लिए. सो दैट वी विल डू इट. कैसे करना है देखते हैं. So we'll copy the same logic here. I mean I'm doing it raw coding, but बाद में you have to convert all of these into functions. Functions के अंदर convert कर functions को use करना पड़ेगा. अभी functions का process पे किया तो it will take a lot of time, इसलिए मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ मैं. So हमने पहले क्या किया, यहाँ पे image को read किया, prediction कर दिया. So image को read किया, prediction कर दिया, and हमारे पास box आ गया. And इस box को हमने क्या करने वाले हैं, we will want to extract the region of interest. So क्या है, image, and we will crop it with using these coordinates. So I want to get the image only from y1 to y2 and only from x1 to x2. So what we are doing here, we are cropping the bounding box image, and यहाँ से हम text extract करना है. text equal to, यहाँ पे हमने इंट्रैक्ट किया ना, pytesseract dot image to string. ये एक मेथड है that we will use. We will pass this ROI and configuration equal to, this is a model configuration है, you can use any other configuration as well. I will not go through these things. And then हमारे पास text आ गया, print f detected text, detected license plate number, license plate number, and then we will pass text here. ठीक है, हमने अभी क्या करने वाले, लेट्स एग्जीक्यूट दिस. सो हमारा पास ये आ गया. एंड इफ यू लुक एट इट, डिटेक्टेड लाइसेंस प्लेट नंबर DL49AK49, DL49AK49. So successfully we have done the object detection of license plate using YOLO, and then we have taken using the PyTesseract OCR technology.
to extract text from here. This is not a production level OCR. So अगर production level पे करना है तो they have some paid versions. It is a free version actually. ठीक है. So any doubts? All your codes can be used to make many products, just changing a little bit of images and logic. Yes, you can just change the input data. I mean, you don't need to change anything. अगर आपके पास मल्टी क्लास ऑब्जेक्ट डिटेक्शन करना है, अभी क्या करना है यहाँ पे, यू जस्ट नीड टू YAML फाइल को चेंज करना है. क्या करना है, एक मिनट. हाँ, यहाँ पे YAML फाइल है ना, यहाँ पे नंबर ऑफ क्लासेस चेंज करना है. एंड इसके अंदर जैसे करना पड़ेगा, बस सेम एवरीथिंग सेम. यहाँ पे एनसी को चेंज करना पड़ेगा, कितना क्लास है आपके पास. एंड यू हैव टू डू द ट्रांसफॉर्मेशन हियर. एंड यू हैव टू कलेक्ट द डेटा एंड यू कैन ट्रेन एनी मॉडल एक्चुअली. सो अभी हम क्या किया, वी हैव लेट्स ट्राई इट विद सम अदर इमेज. सो लेट्स ट्राई दिस इमेज, टेस्ट इमेज पे. सो लेट्स कीप इट हियर. सो हम क्या करने वाले हैं, रुको. सो लेट्स इमेज path equal to, let's keep it here separately, and we will do image path here. इमेज इसलिए फंक्शन चाहिए. फंक्शन है तो यू कैन रीयूज मल्टीपल टाइम्स, नॉट वरिंग अबाउट ऑल ऑफ दिस स्टफ. इमेज पाथ. सो अभी ये एग्जीक्यूट करते हैं एंड लेट्स एग्जीक्यूट दिस. सो KA03AB3380, यहाँ पे नंबर पर डिटेक्ट ही नहीं हुआ, पता नहीं वो सीआर कुछ गंदा किए शायद. एंड लेट्स ट्राई सम अदर थिंग. लेट्स ट्राई 225 image path को, and then let's do the prediction here. ये देखो, डिटेक्टेड नंबर प्लेट JA62UAR, ये भी आ गया. एंड 89% श्योर है इट इज लाइसेंस प्लेट. एंड लेट्स ट्राई वन मोर स्टफ विच इज 77. एंड इफ यू लुक एट इट, यहाँ पे देखो HR है, बट HR नहीं आया, यहाँ पे LR आया. बिकॉज OCR is not that much stable for a free to use application पे. 26 आया, 26 आया, सही है. 6799 सही है, बट अंदर CU है, वो भी निकाल गया. So there are some shortcomings for using OCR. But let me rephrase what we have done so far. We have seen how to build your own data set using RoboFlow or any other stuff. And then we have seen how to convert the data from another format to YOLO format. And then we have done all the coding part live. And then we have did the transformations on all train split सारे कर दिया हमने. And then we saved the files in the text format in a specified YOLO format यहाँ जैसे. And then we created a YAML file. And then you trained the model using the YOLO V8, fine tune किया हमने. And then we have all the metrics that we have, and we have done the printing of these metrics, and we have also seen how you can look at the metrics in the 1DB website as well. And then you have the model predictions, कैसे predict करना है, and how to interpret these model predictions, and how to print this on the images. And we have seen how to use OCR technology using PyTesseract, and how you can convert the region of interest into the text as well. If you look at it, गाड़ी वाले से फोटो ले लिया है, so you can download the data from internet as well. That's a lot of stuff. Any queries? कैसे लग रहा है, कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्या है, कुछ तो फीडबैक. अच्छा लगा सारे देख के, लाइव कोडिंग बस. ग्रेट, फैंटास्टिक, अच्छा है. एंड इन द नेक्स्ट सेशन हम क्या करने वाले, ब्रिलियंट एज यूजुअल. थैंक यू बिस्वजीत, थैंक्स एवरीवन फॉर दिस कमेंट्स. सो हम नेक्स्ट सेशन पे क्या करने वाला है, वी विल डू द लाइव डिप्लॉयमेंट. मैं कोशिश करता हूँ कुबरनेटिस यूज करने के लिए, बट वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा. बट अगर वो नहीं होता तो आई विल ट्राई टू डू स्ट्रीमलिट और फ्लास्क, एंड वी कैन डिप्लॉय द मॉडल, एंड वी कैन ट्राई टू प्रेडिक्ट ऑन द वीडियो एज वेल. So YOLO is pre-trained on what images? YOLO, you can Google it actually. Let me show you. So YOLO model is trained on what? ये देखो. If you look at it, YOLO V2 multi-state involves training multiple images. ये क्या है? What is YOLO trained on? Full images directly optimized techniques. क्या? Usually वो एक ये रहता है ना, 10,000 क्लास डेटा सेट है एक.
इवन आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। उस पर ट्रेन किया, वो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को ट्रेन किया एक्चुअली। कैन वी डू द डिप्लॉयमेंट इन एज्योर? कोको नहीं है जितेंद्र, कोको इज अ वेरी स्मॉल डेटा सेट, बाद में योलो बहुत सारा डेटा पे ट्रेन किया एक्चुअली, तो कोको पे नहीं है एक्चुअली। कैन वी डू डिप्लॉयमेंट इन एज्योर? आई मीन एज्योर पे मुझे एज्योर नहीं आता है, बट वी कैन डू इट, क्योंकि एज्योर इज लाइक ए क्लाउड सर्विस जस्ट लाइक जीसीपी और अमेजोन एडब्ल्यूएस। वहां पे स्टोरेज ले लो, जो हम आपने जो ये बेस्ट मॉडल सेव किया ना, स्टोरेज के अंदर डाल दो मॉडल, एंड देन यू एक इंस्टेंस ले लो। इंस्टेंस के ऊपर यू क्रिएट द एनवायरनमेंट, ऑल द एप्लीकेशंस, पाइथन फाइल्स एंड ऑल दैट स्टफ, एंड यू डिप्लॉय इट फ्रॉम देयर। वो भी कर सकते हैं एक्चुअली, एडब्ल्यूएस पे भी कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग फ्रॉम बांग्लादेश, अहमद अब्दुल फजाल, थैंक यू थैंक यू। दिस may cover in the free cover. We try and AWS, it will be easy. This may cover in the free levels. हाँ आई मीन मेरा पास फ्री क्रेडिट्स खत्म हो गया, बट आप लोग यूज कर सकते, फ्री क्रेडिट्स है तो यू कैन डू दैट डिप्लॉयमेंट इन एडब्ल्यूएस। नाउ यू कैन टेक एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट डिटेक्शन टास्क। आपने प्री प्रोसेस करो अच्छे से, YAML फाइल करो, एंड योलो प्री ट्रेन करो, डिप्लॉय करो, एंड यू कैन डिप्लॉय इट इन अ फुल स्केल प्रोडक्शन लेवल। योलो इज दैट इतना अच्छा है, बट यू नीड टू सी ऑल द शॉर्टकमिंग्स, कहाँ कहाँ पे आपका डेटा कम पड़ रहा है, व्हाट कैन वी डू टू मेक द मॉडल मोर एफिशिएंट, कैसे करने हैं सारे आपने एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। साओ योलो वीएस आर्किटेक्चर, हाँ मैंने भी देखा ना यार, योलो वी8 आर्किटेक्चर बहुत ही बड़ा है एक्चुअली, मैंने यूज कर दिया अभी, सो दैट इज हाउ इट इट इज एक्चुअली। सो योलो वी8 आर्किटेक्चर देखते हैं, ठीक है। हाँ क्लिक ऑन इमेजेस। आ बहुत ही बड़ा है यार। लेट्स गो थ्रू इट। So this is article. We have main blocks, backbone, neck. Okay. You have convolutions, split, bottleneck, concatenations, convolutions, detect neck, bottleneck. Okay, बहुत सारे convolutions है, बहुत सारे skip connections है। If you look at this, skip connection है, ये skip connection है, skip connection है। So बहुत सारे चीजें develop कर दिया यार। Maybe I also need to go through the architecture actually. कन्वोल्यूशन क्या होता है, बट यू नो द बेसिक्स, कन्वोल्यूशंस क्या होता है, पैडिंग क्या होता है, स्ट्राइड्स क्या होता है, यू कैन अंडरस्टैंड दिस आर्किटेक्चर स्टेप बाय स्टेप इफ यू कैन डिकोड इट। वो कर सकते हैं एक्चुअली, डोंट नो नो वरीज। Did you try योलो 9 as well? नहीं यार, योलो भी रन आया कब है, फरवरी मार्च पे आया। आई मीन मैं मेरा काम को इतना रहते हैं, आई डोंट गेट टाइम टू डू रिसर्च ऑन ऑल ऑफ दिस स्टफ। डू वी नीड सम कलर करेक्शन? हाँ कर सकते हैं एक्चुअली, as it was bad in OCR detecting the number due to background। हाँ, oh अच्छी, this is an improvement, Rudraksh। So you need to think about, you need to find where your model is lacking, all that, this is where testing comes into picture। अगर आपके पास QA है, they can test the model for all the different scenarios, and you can list down all the scenarios, and you can try to find what is the optimal way to solve those things। अभी एक चीज बोला आपने, यू कैन डू कलर करेक्शन, वो कर सकते हैं एक्चुअली, दैट माइट इंक्रीज सम परसेंटेज ऑफ एक्यूरेसी इन द ओसीआर। दैट इज अ गुड आइडिया एक्चुअली। ठीक है, हाँ लेट्स क्लोज दिस एट 7:50। 4 मिनट है, क्योंकि यू हैव टाइम टू फॉर द नेक्स्ट सेशन एज वेल। 7:50 को क्लोज कर देते हैं। एनीथिंग दैट यू वांट टू टॉक अबाउट? फिर सब फीडबैक दे दिएगा सब लोग, आई मीन जितना लोग है उतना। Let me keep it here. This is the feedback form. Yes, yes, great, great. हाँ चलेगा। Bubbles आ गया। हाँ। Anything excellent feedback. Thank you so much. Anything that you want to talk about in the next 3 minutes? So next topic, we will do the deployment। वो जितना heavy नहीं रहेगा, but we will also look at how to put this in the resume as well। वो भी हम देखते हैं। Let's see। चलेगा। So will this model work on auto number? So will this model work on auto number plate deduction? Yes. Any number plate it will work.
No worries. But it is better to create multiple models specified to multiple tasks. Agar we are looking, we cannot build a single model that can predict all the number plates in the world. वो नहीं करना है. Goodbye Sadman. So we need to create multiple models segmented to multiple types. इंडिया के लिए एक, इंडिया पे कार्स के लिए एक, लॉरीज के लिए एक, ऐसे डिवाइड कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द यूज केस. चलेगा. चलो everyone, if that is all we can close this call. It was nice